Assalamu alaikum. Welcome to Vivid. Today's topic is Unit 11 Sound. So let's have a look on the topics which we are going to study in this chapter. This is chapter 11 of grade 10. Content of this topic is first of all, we will learn about explain how sound is produced by vibrating sources and that sound waves require a material medium for their propagation. First of all, we will learn how to produce a sound and what material medium will be required to produce sound waves. After that, we will be studying describe the longitudinal nature of sound waves as a series of compressions and rarefactions. Define the terms pitch, loudness, and quality of sound. Describe the effect of change in amplitude on loudness and the effect of change in frequency on pitch of sound. These are the topics which we are going to study in this chapter. Further, define intensity and state, its SI unit. Intensity के बारे में detailed study होगी and then describe what is meant by intensity level and give its unit. Intensity level और उसके unit के बारे में we will study in detail. Explain that noise is nuisance. Describe how reflection of sound may produce echo. This description of audible frequency range, description of importance of acoustic protection, solve problems based on mathematical relation learned in this unit. So these are the few topics which we are going to learn in this chapter. What is the table of content for today? Today we are going to have a look of the topic sound. First of all, overview of sound, और फिर उसके बाद sound waves, production of sound, how sound waves produced, and then I'm going to assign you some assignment in the end. So let's start unit 1 sound, and today's topic is sound waves. Sound waves, like other waves, sound is also produced by vibrating bodies. जैसे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, कुछ waves होती हैं और उनके लिए vibrating body होगी जिससे waves produce होती हैं. जिस तरह रिपल टैक में waves produce की थी, water waves थी. वो water waves कैसे produce हुई थी? किसी vibrating body से produce की थी. वाइब्रेटर लगाया हुआ था वाटर सरफेस के ऊपर जिसकी वजह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी. या किसी भी मीडियम में अगर हमने वेव्स प्रोड्यूस करनी होती हैं तो उसके लिए वाइब्रेटिंग बॉडी रिक्वायर होती है. साउंड भी इसी तरह से बाकी वेव्स की तरह वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होगा. ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स एंड द एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर. अब कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, वाइब्रेशन उसमें स्टार्ट होती है, बॉडी स्टार्ट बॉडी अगर मूव करती है टू एंड फ्रो, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, वाइब्रेट करी है टू एंड फ्रो फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एंड अनदर टू द वन पोजीशन अगेन. अच्छा, अब जब टू एंड फ्रो की मूवमेंट शुरू हो जाती है तो उसके दरमियान में कुछ एयर पार्टिकल्स होते हैं. बॉडी के अराउंड कुछ जो भी एयर पार्टिकल्स होंगे वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. उन एयर वाइब्रेशंस की वजह से सेंसेशन प्रोड्यूस होगी. दो सेंसेशंस कैन बी फेल्ट बाय अवर ईयर एज द साउंड. अब जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, कई दफ़ा आपने देखा होगा कुछ साउंड जिस तरह से प्रोड्यूस हो रही, कोई वाइब्रेट हो रही होती है चीज़ आपकी, वो सिर्फ साउंड एयर पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट करना उसके साथ स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस फील होती हैं साउंड के तौर पे हमारे कान में. फॉर एग्जांपल, इन अ गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स. अब ये गिटार की एग्जांपल आपके सामने है कि जब स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हमें सुनाई देती है कान से. Our voice results from the vibrations of our vocal cords. Human heart beats and vibrations of other organs like lungs also produce sound waves. Doctors use stethoscope to hear this sound. अब vocal cords की जो vibrations होती हैं उससे हमारी आवाज़ पैदा होती है. जो हम बोल रहे होते हैं, हमारे vocal cords की vibrations की वजह से हमारी आवाज़ बनती है. इसी तरह ह्यूमन हार्ट की एग्जांपल है. ह्यूमन हार्ट बीट होता है, वाइब्रेशंस होते हैं ऑर्गन्स में. बाकी ऑर्गन्स में भी वाइब्रेशंस होती हैं, जिस तरह लंग्स में होती हैं, वो भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है. इसी तरह डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेथोस्कोप से हार्ट की बीट चेक करते हैं, या बाकी जो लंग्स का जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी दे कैन फील थ्रू स्टेथोस्कोप.
साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब फर्स्ट एग्जांपल है, हम देखेंगे कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, कि कोई भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी होगी उससे साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी। एक्टिविटी 11.1 है, इन स्कूल लेबोरेटरीज वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड। इफ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोर्क अगेंस्ट रबर हैमर, द ट्यूनिंग फोर्क विल बिगिन टू वाइब्रेट। अब एक ट्यूनिंग फोर्क है, में ये मेटल का बना होता है। अगर हम इस ट्यूनिंग फोर्क को किसी भी रबर हैमर के साथ अगर इसको टकराते हैं तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, वाइब्रेशन जब एयर पार्टिकल्स में स्टार्ट होगी तो वो साउंड में प्रोड्यूस हो जाती है, साउंड बनना शुरू हो जाती है उससे। We can hear the sound produced by tuning fork by bringing it near our ear. अब अगर हम उसको we can also feel the vibrations by slightly touching one of the prongs of the vibrating tuning fork with plastic ball suspended from a thread. अब ये एक एग्जांपल आपके सामने दोबारा है। एक तो जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क को रबर हैमर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने से ये होगा कि उसके जो साइड्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगी। अब वाइब्रेशन उसमें स्टार्ट होगी तो उसके इर्द गिर्द जो एयर पार्टिकल्स हैं दे विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अब एयर पार्टिकल्स जब वाइब्रेट कर रहे होंगे तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होगी विच वी कैन ऑल्सो हेयर, और अगर हम उसको सुन भी सकते हैं, और अगर क्या करते हैं कि कान के करीब लेकर आएंगे तो ही सुनाई देगा। तो दूसरी एग्जांपल हम उनको किस तरह से चेक कर सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं। तो उसके लिए ये भी हम किया जा सकता है कि एक थ्रेड से, एक स्ट्रिंग से प्लास्टिक की बॉल अटैच करते हैं और उसके पास वो लेकर आए ट्यूनिंग फोर्क। तो जैसे ही उस बॉल के पास लेकर आएंगे तो बॉल अपनी पोजीशन से हिलेगी ड्यू टू इट्स वाइब्रेशंस। अब एक और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। टच द बॉल जेंटली विद द prong ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, द ट्यूनिंग फोर्क विल पुश द बॉल बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशंस। देखा, वो बॉल को पुश कर देगा ट्यूनिंग फोर्क और बॉल दूसरी साइड पे मूव करेगी, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इसमें वाइब्रेशंस थी। वो वाइब्रेटरी बॉडी तो हुई, वाइब्रेटिंग बॉडी में वाइब्रेशंस तो हैं। सो फोर्क इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी ओवर हियर। Now, if we dip the vibrating tuning fork into the glass of water, we will see a splash. अब एक और एग्जांपल इसमें हम किस तरह से वाइब्रेशंस चेक कर सकते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क को पानी में डिप करें। एक ग्लास ऑफ वाटर है, यू कैन सी इन द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। अब इफ वी डिप दिस ट्यूनिंग फोर्क इन द वाटर तो एक वाटर स्प्लैश होगा, पानी उछलेगा, बाहर आएगा। व्हाट डज मेक द वाटर स्प्लैश? ऑब्वियसली द वाइब्रेशंस ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो रहा है। ट्यूनिंग फोर्क की जो साइड्स हैं they are vibrating continuously. From this activity we can conclude that sound is produced by vibrating bodies. अब क्योंकि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही, अब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, एयर पार्टिकल्स या उसके इर्द गिर्द जितने भी पार्टिकल्स होंगे इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जिस तरह इसको अगर ट्यूनिंग फोर्क को पानी में डाला था तो पानी स्प्लैश किया, वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके इर्द गिर्द जितने एयर पार्टिकल्स होंगे वो भी मूव करेंगे, जिनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। Here is a second example now. Sound requires material medium for its propagation. What is necessary to produce sound? Unlike light waves, which are electromagnetic in nature and can also pass through vacuum, sound waves require some material medium for their propagation. अब light wave में वो तो electromagnetic nature में, उनमें हमें कोई material medium required नहीं था. It was not necessary to have a material medium. वैक्यूम होगा खाली स्पेस में से जिसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे, उसमें से वो पास कर देगा। लेकिन साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए। सो दिस कैन बी प्रूव्ड बाय अ बेल जार apparatus. द बेल जार इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ वैक्यूम पंप। अब ये बेल जार apparatus है, इसको हम यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। सो दिस कैन बी प्रूव्ड. द बेल जार इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप के ऊपर ये इलेक्ट्रिक बेल जार पड़ी हुई है। An electric bell is suspended in the bell jar with the help of two wires. You can see here are two wires और ये बेल उसमें लटकी हुई है, कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। जो बाहर पावर सप्लाई है उसको बिजली कनेक्ट करेगी उसके साथ। बाय सेटिंग ऑन द पावर सप्लाई, अब अगर यहाँ से ऑन कर देते हैं, करंट आना शुरू हो जाता है, उसमें से एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल, आवाज आना शुरू हो जाएगी बेल की, क्योंकि हमने उसमें करंट ऑन कर दिया।
Now start pumping out air from the jar. वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप से क्या होगा कि उसमें से हम सारी जो एयर है उसको बाहर निकाल लेंगे. वैक्यूम पंप चलाएंगे तो स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय मीन्स ऑफ द वैक्यूम पंप. सारी एयर जब हम उसमें से बाहर निकाल लेंगे, द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल एंड इवेंचुअली डाइज आउट. अब उसके साथ साथ क्या नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हवा या एयर कम होती जा रही है उसमें से, वैक्यूम पंप से हमने एयर बाहर निकाली. अब एयर अगर बाहर आती जाएगी उसमें जो बेल की आवाज़ आ रही थी पहले स्टार्ट से, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी. जबकि सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि पहले एयर थी, अब एयर ना होने की वजह से जैसे जैसे एयर कम होती जाएगी उसी तरह उसकी आवाज़ भी, साउंड भी कम होती जाएगी. ऑल्दो द बेल इज स्टिल रिंगिंग, बेल तो उसी स्पीड में उसी तरह से पहले ही रिंग कर रही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब एयर नहीं है, देयर इज नो एयर, सो इट्स स्टार्ट बिकमिंग फीबल. When we put the air back into the jar, we can hear the sound of the bell again. अब इसी तरह वैक्यूम पंप से दोबारा अगर एयर जार में दोबारा वापस डालते हैं तो डिफरेंस क्या होगा कि we can hear the bell again. So from this activity, we can conclude that sound waves can travel or propagate in the presence of air medium. कि एयर से तो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर एयर नहीं होगी तो देयर विल बी नो साउंड, और साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट साउंड. वी रिक्वायर एयर इन दिस एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस द साउंड. So let me generate a poll. What do we require to propagate sound? Do we require no medium or any medium? So here are two options in front of you. You can choose the correct answer. What do you think is the correct option? What do we require to propagate a sound? Option 1 is no medium and option 2 is any medium. So it's up to you. You can give me your opinion by choosing the correct option. I am ending this poll and sharing results. So this was the question from this topic. We need, the correct option is yes, we need a medium to propagate a sound. A sound can only be produced when through a material medium. There should be a material medium to produce a sound. When there is no medium, like light waves, there will be no sound. This is the example कि हमें light can reach from sun to us, लेकिन we cannot hear the sounds. Although जो explosion sun पे हो रहे होते हैं, it is necessary that they have huge sounds, लेकिन स्पेस की वजह से लाइट तो हमारे तक पहुंच जाती है लेकिन साउंड हम तक नहीं आती. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि मटेरियल मीडियम होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी और ट्रेवल भी करेगी. ट्रेवल भी सिर्फ तभी करती है साउंड जबकि मटेरियल मीडियम सपोर्टिव होगा, मटेरियल मीडियम होगा. वैक्यूम में या जहाँ पे कोई एयर नहीं होगी, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा, वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करती. Now we can watch a video so that we get a clearer concept of sound waves. Sound कैसे produce होती है और इनकी कुछ properties हैं. So let's watch a video. I'm just playing it. This online science video is powered by Science Clinic and proudly supported by UNISA's College of Science, Engineering and Technology. In this video, we will discuss the properties of all sound waves are made by vibrations. Sound waves are 3D longitudinal waves that can only travel through a medium such as air, water, or even metal. Sound waves, since they are longitudinal waves,
consists of refractions and compressions. So remember from the previous video that a compression is the area where the particles are packed close to one another, and a refraction is where the particles are further apart. Sound is also known as a pressure wave. If we look at the speaker, you can clearly see the area of compression and refraction. So in the compression area, the particles, the air particles specifically, are closer to one another, and in the refraction, you can clearly see the gap. So a speaker transmits its sound by vibrating the air particles. So since sound is a wave, it has to have wave properties. So we have frequency, which we perceive as pitch. It is also measured in hertz. If we have a high pitch, we have a high frequency. If we have a low pitch, we have a low frequency. The amplitude is what we perceive as volume or the loudness. It is measured in decibels, and the high volume relates to a large amplitude and a low volume to a small amplitude. So let's ask ourselves a question. In which state does sound travel the fastest? Would it be the solid, the liquid, or the gas? Well, if we look at the solid, the particles are packed quite close to one another, whereas up to the gas, the particles are further apart. So if I have something that is vibrating, then these particles would transfer energy at a slower rate than the solid particles. So the particles in the solid would actually transfer my energy quicker, would actually transfer the sound quicker. Also remember that sound is just the form of energy. We have a large range of sound. We as humans only hear between 20 to 20 kilohertz, whereas elephants communicate using a sound below 20 hertz, which we call ultrasound. Bats use ultrasound and frequencies beyond 100 kilohertz to locate their prey and navigate in the dark. And these are sounds that we can't even hear as humans. So we can only hear between the 20 and 20 kilohertz. Ultrasound is also used in medical treatments, such as for sports injuries and the imaging in pregnancy. Since sound is a wave, it can be reflected. So then we have a sound echo. If I have a satellite sending sound waves all the way up to a plane, it can be reflected back to it or back to Earth. And if we measure that sound, we can also determine the distance that the plane is at. Let's have a quick look at the next example. So the time taken for an echo to be heard by a satellite from a plane is 9 seconds. The speed of sound in air is always 340 meters per second minus 1. Determine the distance from the plane to the satellite. Okay, so this will always be a two-step calculation. First of all, we have the speed of sound in air, 340, and we have the time that it took for the satellite to hear the sound again. So the sound traveled upwards to the plane and was reflected back towards the satellite. So the distance that we calculate here would be the distance from the satellite to the plane and back. This means that the distance to the plane would obviously be half that. We have to divide that distance by 2 and we get an answer of 1530 meters. In another example, we have the time taken for an echo to be heard by a listener on a ship is measured and is found to be 0.8 seconds. The speed of sound in water is 1,480 meters per second, which is a lot more than what it is in air. So this has to mean that sound travels faster in a more dense medium. Determine the depth of the water at this point. Again, two-step calculation. We have time as well as the speed. So with time and speed, we can easily calculate the distance that it traveled. But we don't want the total distance, we want the depth. So remember that sound has to travel to the bottom and then reflect back to the ship. And that is what this answer is. But we want the depth, which means it would have to be the distance
divided by 2. And you get a nice answer of 592 meters. In the last example, we have a man which stands 250 meters from a wall and hears the echo of his gunshot after 1.5 seconds. Calculate the velocity of the sound under these circumstances. So to me, this makes very little sense without a picture. So we have a man 250 meters from a wall, and don't forget he is holding a gun. And as he shoots his gun, sound travels to a wall and travels back to his ear, and it takes a total of 1.5 seconds. So what we can calculate now is the distance traveled by the sound. So that is simply the distance that we have times 2, because my sound traveled to the wall and back to the guy's ear, which means double the distance. And this all happened in a time of 1.5 seconds. So we can calculate the speed by dividing the distance by the time, and then we get a nice answer which is quite close to the constant for speed in air, which is 340 meters per second. I hope that you found this video educational. Please like us on Facebook. So this was the topic for today. As we learned about sound and how sound is produced by using some material medium and vibrations are how effective for the production of sound. Tomorrow we will study it in detail, the properties of sound, and we will learn about how many kinds of sound waves are there. So this was all for today, and